Assalamu alaikum students, welcome to IAS School System Pindicap. This is our second lecture of math and it is for class 3. First of all, open your book page number 22. On page number 22 you can see the topic skip counting of 4-digit numbers. In this in this topic we will learn about numbers and counting of 4-digit number. We will skip counting of 4-digit numbers. First, here is a number line and there are 4-digit numbers. For examples, ones, tens, hundred, thousand. These are 4-digit number. So now we have to skip this counting in twos. Bunny is skipping from 3602 to 3604. He is jumping from 2 to 4, then 3606, 8, 10, 12 and 14. We call this skip counting. Here Bunny is jumping from one number to other number and he is skipping one number. So you have to write this number here. We will write 3603. Then 4 आपके पास लिखा हुआ है 5, 6 लिखा हुआ है 7, 8, 9 लिखना है आपने, 10 लिखा हुआ है 11, 12 आपके पास लिखा हुआ है एंड आपने 13 लिखना है. दिस इज कॉल्ड स्किप काउंटिंग. ओके, नाउ वी विल डू some questions. Do skip counting in twos and write numbers. Skip counting mean आपने कुछ numbers को छोड़ना है, 2 में लिखनी है तो आपने एक नंबर छोड़ना होगा. ओके, दिस इज 7644 to 7654. 10 डिजिट से आपके पास आपने एक डिजिट को स्किप करते जाना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7644. 45 को आपने स्किप करना है, 46, 47 को स्किप करके 7648, देन 49 को स्किप करना है तो 50, 51 को स्किप करके 52, 53 को स्किप करके आपने लिखना है 7654. ओके स्टूडेंट, नाउ सी पार्ट 6036 to 6046. डू द सेम थिंग. 6036 स्टार्ट हमने यहाँ से ही लेना है, देन 37 को छोड़ना है, 6038, 6039 को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, 6040, देन स्किप 6041, वी विल राइट 6042 एंड स्किप 6043, we will write 6044, skip 6043, then write 6046. This is skip counting from 6036 to 6046. Our F part is 9320 to 9328. We will do the same work. We will start from 9320, 21 को छोड़ के 22, then skip 23, we will write 24, skip 25, we will write 26, skip 27, we will write 28. This is skip counting from 9320 to 9328. Remaining parts from question 1 is your home task. Now activity number 2 is skip counting in threes and write numbers. On your book you can see Bunny is jumping from one number to another number, but he is skipping 2 numbers. This is called skip counting in threes. For example, 2010, then 11 and 12 को आपने छोड़ के 2013 पे जाना है. Then 2014 and 15 skip करके 2016. After skipping 2017 and 18, we will write 2019. After skipping 2020 and 21, we will write 2022. And after skipping 23 and 24, we will write 2025. And after skipping 26 and 27, we will write 2028. This is skip counting in threes. Now E part 1094. We will skip
1095 and 1096. So we will write 1097. Then 98 and 99 इनको skip करके this will becomes 1100. 1101 and 1102 we will skip. Then we will write 1103. We will skip 1104 and 1105. Then we will write 1106. Now we will skip 1107, 1108 and 1109 is already written here. Now we will skip 1110 and 1111. We will write 1112. We have 1112. We also read this 1103, 1106, 1109, 1112. Okay students, today this was our lecture number 2 and your home assessment is remaining parts on book. जो parts आपके रह गए हैं, suppose we will do a E, D and E part on home task, and from activity number 2 A, B, D and F part is your home task, plus any 3 from 1 and any 3 from 2 on register. रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसमें से जो रह गए हैं उनको अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, और एक्टिविटी नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट्स आपने अपने रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं लाइक दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. अल्लाह हाफिज़.